ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಡಂನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರನ್ನ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಡಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರು. ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೋಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇದೆ ತಾವೆಲ್ಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಈ ದೇಶ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಬಂಧು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಐಸಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಪ್ಪಣಪ್ಪ ಕಮಕ್ನೂರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಲಾಶನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗನ್ ಗೌಡ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು, CWCಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಸಿರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಭಾಷ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡರು, ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮತ ಯಾಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾಂತಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ? ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ? ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ. ನಾವು ನಮ್ಮ 2ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು 200 ಯೂನಿಟ್ ತನಕ ಕರೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 95% ಜನ ಯಾರು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 3ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 4ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಖರೀದಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಪುಕ್ಕಟ್ಟಾಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಖರೀದಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಡವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಡೆಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬಡವರ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ 170 ರೂಪಾಯಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 5ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೇ ನಾವೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ AICC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದು ಬಡವರ ಪಕ್ಷ. ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಡವರ ಸರ್ಕಾರ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಎಂದು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 70,000 ಕೋಟಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು. ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತರ 12 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದ ಬಡವರ, ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಾರ್ಟಿ. ಅವರಿಂದ ಯಾವ ರೈತರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾವು ನನಗೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 43,500 ಮತಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ. ತಾವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಬಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು 30 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಾಬು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿನಿಮಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಂದೂ ಯಾರ್ದು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕ. ಎಂದೂ MLA MP ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಮತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇನೆ, ನೀವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರೀ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. మిత్రులారా, ఈరోజు మన పార్లమెంట్ ఎన్నికల సందర్భంగా శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ని గెలిపించాలని ఆదేశిస్తే మీ అభిమాన నాయకుడు, మీ ఎమ్మెల్యే మంత్రివర్యులు శరణ్ ప్రకాష్ గారు ఇంత పెద్ద ఎత్తున సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి
ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా ఏఐసిసి అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారిని, శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారిని, రణ్దీప్ సింగ్ సుర్జేవాలాను ఈ సమావేశానికి, ప్రియాంక గాంధీ గారికి స్వాగతం పలకండి. అందరు లేచి నించోండి. మీ అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ గారు, మంత్రివర్యులు ప్రియాంక్ ఖర్గే గారు, గుల్బర్గా జిల్లా కాంగ్రెస్ నాయకులు, మీ సేడం తాలూకా కాంగ్రెస్ నాయకులు, మండల పార్టీ నాయకులు, గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. ఈ సభని సమావేశాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మీకందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. మిత్రులారా, ఈరోజు దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తున్నారు. ఈ పోరాటంలో కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి జాతీయ అధ్యక్షుడిగా మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఉన్నారు. వారి నేతృత్వంలో కర్ణాటక నుంచి 20 పార్లమెంట్ గెలిపించి నరేంద్ర మోడీ గారిని గద్దెదించడానికి మీరందరూ సహకరించాల్సిందిగా మీ అందరిని కోరుకుంటున్నా. మీకందరికీ తెలుసు, నాది పక్కనే కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం. తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మీద కేసులు పెడుతుంటే అక్కడ వేలాది మంది కార్యకర్తలు అండగా నిలబడి బీఆర్ఎస్ను ఓడించి ఈరోజు కాంగ్రెస్ను అధికారంలోకి తీసుకొచ్చింది. మీకు ఎప్పుడైనా ఏ అవసరం ఉన్నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ మీకు అండగా నిలబడడానికి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నది. అందుకే ఈరోజు మీరు ఆలోచన చేయండి. పోయిన ఎన్నికల్లో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో 28 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలు ఉంటే 25 పార్లమెంటు నియోజకవర్గాలు భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీని గెలిపించింది. కానీ కర్ణాటక రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన కేంద్ర మంత్రి పదవి, క్యాబినెట్ ర్యాంక్ మంత్రి పదవి ఇచ్చింది ఒకే ఒక్కటి. కానీ అదే గుజరాత్కు 26 మంది ఎంపీలు ఉంటే 7 మంత్రి పదవులు ఇచ్చిండ్రు. మీ కర్ణాటకలో కరువు వస్తే మీ బెంగళూరులో తాగడానికి నీళ్ళు ఇవ్వలేదు, ప్రాజెక్టులు కట్టడానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు. కర్ణాటక రాష్ట్రం కరువు వస్తే కరువు కోసం మీ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయాన్ని అడిగితే మీకు ఎలాంటి సహాయం చేయలేదు. అందుకే కర్ణాటక ప్రభుత్వం సిద్ధరామయ్య గారు, డికే శివకుమార్ గారు జంతర్ మంతర్లో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేసి సుప్రీంకోర్టుకు పోయి మీకు ఈరోజు నిధులు తీసుకొచ్చి ఈరోజు మీ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటుంది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడాలి. भाई बहनों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, मगर नरेंद्र मोदी जी को 2 बार 10 साल सरकार चलाने के लिए मौका दिए। पिछले चुनाव में कर्नाटक से 25 पार्लियामेंट मेंबर को जिता के दिए, मगर आपको और आपके शहर बेंगलुरु में पीने का पानी नहीं रहा तो कम से कम पानी नहीं दिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए परमिशन भी नहीं दिए। इसके अलावा 25 एमपी रहा तो एक ही एक कैबिनेट मिनिस्टर आप लोगों को दिए। कर्नाटका
आज आपके लोग बोल रहे हैं कर्नाटक को क्या दिए बोले तो एक चंबू दिए, छोटा चंबू दिया बोल के आपके कर्नाटक के लोग कह रहे हैं। इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं बीजेपी, आपका SC ST BC OBC रिजर्वेशन हटाने के लिए बीजेपी 400 सीट मांग रहा है। मैं एक ही गुजारिश करता हूं कर्नाटक भाइयों से, अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताए तो आपकी SC ST OBC माइनॉरिटी रिजर्वेशन चला जाएंगे। अगर आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दिए तो आपका SC ST रिजर्वेशन और माइनॉरिटी रिजर्वेशन लागू रहेगा। इसीलिए कर्नाटक जनता, आप लोग सोचो, आपकी धरती पुत्र, आप गुरमिटकल से अपना मल्लिकार्जुन खड़गे जी 8 बार MLA चुनाव जिताए आप ही लोग, पूरे 9 बार MLA को जिताए, 2 बार पार्लियामेंट मेंबर को जिताए। 50 साल से खड़गे जी आपके तरफ से दिल्ली से दिल्ली तक लड़ा हुआ है, आपके नाम रोशन किए। आज कर्नाटक के भाई लोग दिल्ली गए तो एक हिम्मत है, आपके नेता खड़गे जी दिल्ली में AICC अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है। सोनिया जी खड़गे जी को इतना बड़ा मौका दिए AICC अध्यक्ष बनने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ता ने ये मौका दिया हुआ है। मैं आज कर्नाटक भाइयों से एक ही बात पूछ रहा हूं, आपके नेता नेशनल लीडर बना, नेशनल प्रेसिडेंट बना, आप उनके साथ खड़े रहने का वक्त आए। जब गुजरात के सारे जनता नरेंद्र मोदी को 25 के 25 सीट दिया हुआ है, फिर आप लोग कर्नाटक से भी 25 सीट देने का जरूरत है। आज सवाल है कर्नाटक वर्सेस गुजरात, क्योंकि 26 सीटें गुजरात में, यहां पर भी 28 सीट्स है। अभी देखता हूं मैं कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटक से, अमित शाह नरेंद्र मोदी गुजरात से है, फिर वहां पर उन लोगों को ज्यादा मदद गुजरात से मिलेंगे, नहीं तो हमारे नेता खड़गे जी को कर्नाटक से मदद मिलने वाले हैं। इसीलिए हमारे भाइयों से एक ही गुजारिश है, खड़गे जी को आप मदद दे दो, 25-26 सीट कर्नाटक से दिलाओ, केंद्र में सरकार बनाएंगे, लाल कोटा पे तिरंगा झंडा लहराने का जिम्मेदारी प्रियंका जी उठाने वाली है, राहुल जी उठाने वाले। हम साथ में रहकर, साथ खड़े रहकर मोदी जी को हराएंगे। मोदी जी आज तक अमित शाह जी ED, इनकम टैक्स, CBI को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है, सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ED, इनकम टैक्स, CBI हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में, क्योंकि राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा किए। कर्नाटक में सरकार बने, तेलंगाना में भी सरकार बने, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी अपना सरकार बनने वाले, केंद्र में भी अपना सरकार बनने वाले। अपने लिए अपना नेता है खड़गे जी है, अपने नेता सोनिया जी है। इसीलिए मेरा गुजारिश यहाँ के सेडम के लोगों को, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, बगल के तेलंगाना आपको पता है, मेरा असेंबली भी कोडंगल है। आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े मुझे एक आवाज दो, मैं यहाँ हाजिर हूँगा। आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े तो सीधा हैदराबाद चल कर आओ, मैं वहां रहता हूँ। आप लोगों के लिए काम करने के लिए, आप लोगों को मदद करने के लिए हमेशा मैं हाजिर रहता हूँ। यहीं मेरा भाषण खत्म करते हुए मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ। जय कांग्रेस,
जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿಜಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರೇ, ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕನೂರ್ ಅವರೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, MLC UB ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಂದರೇ, ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಯಿಂದಿರು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ MLA ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ಆ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೈಯೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೈತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೋದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೈತಾನೆ, ಇವನು ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ನನಗೊಂದು ಕಡೆ ಬೈಯೋದು. ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ನಾವಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371(j) ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಕಡೆ ಒಂದು PDO ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಡೆ ಇವತ್ತು 7 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟೇವೆ? ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371 ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರಿ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಂಥವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡೇವೆ. ಅದನ್ನ ಅದಾನಿ ಅವರು ಒಯ್ದು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, MP ಆಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು CLP ಲೀಡರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371(j) ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ 208 ಸೀಟ್ ಇದ್ದು, ನಮಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 330 ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂತಿಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಂದೇವೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ESI ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ತಂದೇವೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೋದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಬೋಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿನಲ್ಲಿ. ಟ್ರೈನ್ಗಳಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಗಳು 37 ಟ್ರೈನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಗುರುತು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದಿದೇನಾ? ಆದ್ರೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ भाइयों बहनों, मैंने वो कर दिया, देश को मजबूत बनाया. देश को क्या मजबूत बनाते हो तुम? देश में का पैसा चंद लोगों के हाथ में डाल रहे हो. इस देश में 22 लोगों के हाथ में
70 करोड़ पॉपुलेशन की संपत्ति उनके हाथ में है। और मोदी बोलते हैं मैंने वो किया, क्या किया? अब मोदी की ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮದಂತೂ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ ಇಲ್ಲ? ಮಾಡಿದೇವನವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದೆವು. ಹೀಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ನಡೆದರು. ಮಣಿಪುರದಿಂದ ಬಾಂಬೆವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜನಸಂಘ ಅಂತಿತ್ತು ಅವಾಗ, ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೋದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಮೋದಿ ಅಂತೂ ಪಾಪ ಅವಾಗೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ನಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಸತ್ಯಾನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? 55 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಂತೂ 70 ವರ್ಷ ಅಂತಿದ್ರು, ಈಗ 55 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬರಿದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ಮೋದಿ ಅವರೇ ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದನ್ನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕ್ಯಾ ಕರೆ ಅರೆ ಹಮ್ ಕಿಯೇ ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೇ ತುಮ್ ಜೀ ರಹೆ ಹೋ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ದು ಬಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು, ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೇರಿ ನಾವು 5 ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 5 ನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನ್ಯಾಯ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಯುವ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯುವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ರೈತ ನ್ಯಾಯ. ಆ ರೈತ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೋದಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಾರ ರೈತರಿಗೆ? ಹಿಂದೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 72,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈತರು. ಇವ 1 ಪೈಸಾನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. ಕಿಸಾನ್ ಭಾಯಿಯೋ ಬೈನೋ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರದ್ದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಕ್ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಜಾತೀಯ ಜನಗಣತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾಲುದಾರರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ
ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನಗಣತಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಜನಗಣತಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವರು ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ದೀನರು ಇರ್ಬೋದು, ದಲಿತರು ಇರ್ಬೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಜಾತಿ ಜನಗಣನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, सबका छीन के मुसलमानों को दे रहे. कहा भाई, हमारे तो मैनिफेस्टो में कहीं लिखा ही नहीं, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಅವರಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿರೋ ಸರ್ದಾರ, ಸುಳ್ಳಿರೋ ಸರ್ದಾರ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. 2 ಕೋಟಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ನ, 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ನ, ರೈತರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ದ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಗದವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಲೀಕರಾದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ತು, ಮನೆಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ದ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೋದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಮಾರಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಚೀನ್ ಲೇಕರ್ मुसलमानों को दे रहे. अरे निजाम के टाइम में नहीं हुआ, ये तो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में इसको कांग्रेस पार्टी कभी नहीं ऐसा वक्त आने नहीं देगी. अगर वो भी करना चाहते हैं तो हम रोक देंगे और उनको बताएंगे उनका रास्ता क्या है. मंगलसूत्र छीन लेंगे. वो हमारे प्रियंका जी अच्छी बात करते हैं, क्योंकि परसों ही उन्होंने ठीक ढंग से बात किया. उतने ठीक तरीके से मुझे नहीं आता, वो करेंगे. लेकिन मैं यही कहने आया हूं, किसी का मंगलसूत्र छीनने वाला कांग्रेस नहीं है. अपने लोगों को खोया है, अपने लोगों को बलिदान दिया है, कुर्बानी की है. ऐसे लोगों को तुम नाम रखते हो. इसीलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता और एक चीज आपके सामने पढ़ के बताऊंगा. जो कांग्रेस पार्टी, जब सोनिया गांधी जी ने, सॉरी हमारे इंदिरा गांधी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर थे, जगजीवन राम उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे. उन्होंने ऐसी अफवाह उस वक्त भी उठाई थी, ऐसा ही अफवाह उठा, अरे आपकी प्रॉपर्टी छीन लेके दूसरों को दे रहे, आप निम्दೆಲ್ಲ ಹೊಲ ಮನಿ ಬಂಗಾರ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋದವರು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಜನಸಂಘದವರು. ಅವತ್ತಿನ ಜನಸಂಘ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ, ಅವತ್ತಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ತೆಗೆದರು. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಸುಮಾರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿದೆ. ಅದು ನಾವೆಂದೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಕಂತ ಕುಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆ ಮಾತಿನ ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು 1970ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗಲ್ಲ, ಈಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1970ನಲ್ಲಿ
ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಇದ್ರಾಗ ಓಪನ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ provided by Indian Constitution in respect of right to property. A sinister propaganda has been started by some conservative parties like the Swatantra, Jansangh and late Congress that the Congress is planning to take away the right to property from the Constitution and even to deprive of the few acres of land or small houses that they own. ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಲ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಲ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಕಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಜನಸಂಘದವರು 70ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 53 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಾಗಿದ್ದು. ನೀವೆಂದಾರ ಕೇಳಿರ, ನಾವು ಎಂದಾರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂಗಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವ? ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೈಯೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾವು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದವರು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಜಬೂತ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೈ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಸತ್ತರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕಮಲದ ಹೂ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಕಡ್ದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬಾಡ ಹೂವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮಜಬೂತ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಮಜಬೂತ್ ಇದೆ, ಕೈಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದರ ಬ್ರೇನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, गर्मी भी है आज। धन्यवाद। सबसे पहले मैं परमादरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से क्षमा चाहती हूं कि वो मंच पे बैठे थे और मुझे देर हो गई। उनसे हम सबको प्रेरणा मिलती है। दिल्ली में हवाई जहाज का क्लियरेंस मिलना था, उसमें देर हुई, इसीलिए मुझे देर हुई। मैं आप सब से भी क्षमा चाहती हूं क्योंकि आप भी बहुत समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मौजूद श्री रेवंत रेड्डी जी, श्री रणदीप सुरजेवाला जी, श्री शरण प्रकाश पाटिल जी, श्री प्रियंक खड़गे जी, श्री अजय सिंह जी, श्री जगदेव गुटेदार जी,
और सभी उपस्थित नेतागण, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण का मेरा इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और मेरी प्यारी बहनों, आप बहुत समय से बैठी हैं, आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये बसवन्ना जी की धरती है, ख्वाजा बंदे नवाज जी की धरती है। यहाँ आपने बड़े संतों की सीख आपने निभाई, मिलजुल कर प्रेम से आप सब रहते हैं। सच्चाई, सत्य का जो पथ था वो आपको दिखाया गया और आपकी ये धरती एक तरह से एक पवित्र धरती है। ये परमादरणीय खड़गे जी की भी कर्मभूमि है। वो संघर्ष के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक हैं। और जैसे मैंने कहा, हम सब के लिए उस राजनीति के मिसाल हैं जो राजनीति सच्चाई की राजनीति है, श्रद्धा की राजनीति है और एक समर्पित राजनीति है। देखिए मेरी प्यारी बहनें, ये जो संतों की धरती है, इसने आप सबको सत्य के बारे में सिखाया, एक रास्ता दिखाया। हमारा देश भी ऐसा देश है जिसके बारे में, जिसका जो आधार है वो सत्य में जयते हैं। आप सब जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाते हैं? जब पहली बार माँ बच्चे को डांटती है, तब यही कहकर डांटती है कि सच बोलो। अगर बच्चे ने कुछ गलत बोला हो तो माँ हमेशा सबसे पहले चीज बच्चे को यही सिखाती है कि सच बोलना है बेटा। सच बात है कि नहीं? सही बात है। आपको हिंदी समझ में आ रही है? आ रही है? ट्रांसलेशन नहीं चाहिए? पक्का? तो देखिए, इस देश की नींव सत्य के आधार पर डली। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन सत्य के आधार पर किया। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज इस आंदोलन में शामिल हुए। तो हमारी जो राजनीति है वो पूरी राजनीति ही सच्चाई के आधार पर बनी। हमने हमेशा अपने नेताओं से ये उम्मीद रखी, ये आशा रखी कि हमारे नेता हमारे प्रति श्रद्धा रखेंगे, हमारे देश के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, सेवा का भाव रखेंगे। और सबसे ऊपर हमने आशा यही रखी कि हमारे नेता हमसे सच बोलेंगे और एक ऐसी राजनीति होगी हमारे देश में जो सत्य पर आधारित होगी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी राजनीति करके आपको दिखाई। जो जो सरकारें आई, हमेशा आपके लिए सच्चाई से और श्रद्धा से काम करके दिखाया। लेकिन आज इस देश की सच्चाई बदल रही है। 10 सालों से आपने देखा कि जो राजनीति आपके सामने हो रही है वो शान, शोहरत, स्वाभिमान और सत्ता की राजनीति है। उसमें सत्य की कोई जगह नहीं रही। आपने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर जो आपके सांसद हैं यहाँ के, आपके प्रति उनके दिल में कोई जवाबदेही की भावना नहीं रही। ये एहसास नहीं रहा कि जब आपके सामने आएंगे तो आपसे सच बोलना है, आपसे झूठ नहीं बोलना है। आपके सांसद तो ऐसे रहे कि आपके सामने आते ही नहीं हैं, यहाँ रहते ही नहीं हैं। 5 सालों में आपके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। एक ट्रेन चालू की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ आपके जीवन का संघर्ष है। मेरी बहनें सुबह से शाम तक मेहनत करती हो,
अगर जॉब करती हो या खेती में जाती हो काम करने या किसी घर में काम करती हो, घर आके भी काम करती हो, घर आके भी बच्चों को देखना है, परिवार को संभालना है, सबने खाना खाया, सब अच्छे से सो गए हैं, तभी जाकर आप सोती हो, पूरे समाज का बोझ उठाती हो। लेकिन आपकी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आपको पीने का पानी तक नहीं मिलता, उसकी इतनी किल्लत है, फिर भी आपके सांसद ने केंद्र में सरकार होते हुए नारे लगाए, आपको बताया कि हर नल में जल आएगा, लेकिन आपके पास अभी तक पीने का पानी नहीं आया। देश में आज भयानक बेरोजगारी है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपने मेहनत करके भाइयों अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किसी ने पीएचडी की, किसी ने एमएससी की, किसी ने बीए की, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को रोजगार नहीं मिला। यहाँ से पलायन होता है, हैदराबाद तक जाते हैं बच्चे, मुंबई जाते हैं, दिल्ली तक पलायन होता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करते हैं पढ़े लिखे बच्चे। यहाँ सेदम के सीमेंट कारखाने में आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार बनाने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर जैसी स्कीम बनाई, जिसमें जो सेना में भर्ती करने के लिए नौजवान उत्सुक होता था, जिसकी आशा होती थी कि देश के लिए वो कुछ करेगा, देश की रक्षा करेगा, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होता था, उसके लिए अग्निवीर स्कीम ले आए। उस सेना की भर्ती उन्होंने 4-5 सालों की कर ली, ताकि उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि जीवन भर के लिए सेवा करने के बाद कोई जीवन की सुरक्षा होगी, आमदनी होगी, माँ बाप के लिए कुछ घर ला पाएंगे। तो इस सरकार ने रोजगार के मुद्दे को एकदम नकारा है। इसके 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार पैदा करने के लिए एक सही काम नहीं किया। बड़े बड़े कारखाने होते थे सरकार के, पीएसयू, उनकी सब्सिडरी सारी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को बांट दी। जो बंदरगाह थे, जो एयरपोर्ट थे, जितनी भी बड़े बड़े सरकार के संस्थान से थे, एक एक करके अपने दोस्तों को बांट दिए। खेती किसानी में आज किसान कमा नहीं पा रहा है। जितने खेती के सामान हैं, सब पे जीएसटी लगा लगा कर आपके कमर तोड़े। आप कमा नहीं पा रहे खेती से, तो औरों को कैसे कमाई करवाएंगे? खेती से नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था, आज वो भी बंद हो गया है। छोटे कारोबारों से रोजगार मिलता था, छोटे दुकान, छोटे बिजनेस। जीएसटी, नोटबंदी करके ऐसी नीतियां बनाई कि सबके छोटे छोटे कारोबार तकरीबन खत्म होने जा रहे हैं। कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, काफी कमा नहीं पा रहा है, तो रोजगार बन नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। ये परिस्थितियां हैं आज देश की। यहाँ पे खड़गे जी रेलवे डिवीजन लाए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाए, ईएसआई का विस्तार करने का प्रोग्राम था ताकि एम्स आ पाए, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाना था। सब चीजें सरकार ने रिजेक्ट कर दी। क्यों रिजेक्ट की? क्योंकि ये खड़गे जी की कर्म भूमि है, इसलिए क्योंकि खड़गे जी पूरे देश के सामने इनकी सच्चाई को खोलते हैं, क्योंकि खड़गे जी लड़ते हैं आपके लिए। इसीलिए समझ लीजिए इस सरकार की नीयत क्या है। ये जनता की भलाई नहीं देखते, ये अपनी सत्ता देखते हैं, ये राजनीति देखते हैं, और राजनीति और सत्ता के आधार पर साफ निर्णय करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसी गारंटी लाई है जिसको आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। कर्नाटका की सरकार ने पूरा करके आपको दिखाया। कई सारी महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की सरकार दे रही है, और ये काम शुरू हो गया है। आस्ते आस्ते सबको मिलेगा। इसी तरह से देश भर में हम गारंटी देते हैं कि 30 लाख सरकारी पद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खाली रखे हैं।
उन 30 लाख पदों को हम भरेंगे। अग्निवीर जैसी स्कीमों को हम रद्द करेंगे, बंद करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए का फंड निकालेंगे ताकि जो नौजवान अपना छोटा कारोबार या बिजनेस शुरू करना चाहता है उसको सुविधा हो। शिक्षा के लिए हम जो आप लोन लेते हैं उनको माफ करेंगे और शहरों में भी न्यूनतम रोजगार 400 रुपए का होगा और न्यूनतम रोजगार की गारंटी मिलेगी। कम से कम 100 दिन का रोजगार शहरों में भी कानून से आपको गारंटी मिलेगी। मैंने किसान भाइयों की बात की। आज देश का किसान पिस रहा है। मैं जानती हूं कि आपकी तकलीफ क्या है कि खेती के हर सामान के लिए आप जीएसटी दे रहे हैं। जब आपके कर्ज माफ करने की बात होती है तो मोदी जी सरकार की सरकार कहती है कि पैसे नहीं हैं, लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ करने का समय आता है तो पलक नहीं झपकाते हैं, एकदम से वो लोन माफ कर देते हैं। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकते हैं लेकिन आपके कर्ज माफ नहीं करते। यहाँ तुअर दाल नंबर 1 पे है, लेकिन आज उसकी इंपोर्ट की ड्यूटी ये लोग बढ़ाते नहीं हैं ताकि जो बाहर से विदेशी तुअर दाल है वो आसानी से बिकती है और जो तुअर दाल आप यहाँ की खेती से आपकी उपज है वो बिक नहीं पाती। इन्होंने हर स्तर पर किसानों को कमजोर करने का काम किया है। बड़े बड़े वादे किए, किसान की आमदनी दुगनी होगी, लेकिन सारे वादे खोखले निकले। एक ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको यहाँ पे तुअर दाल का हब बनाया जाए। उन्होंने आपके सामने ये वादा किया था कुछ सालों पहले, चुनाव आया, चुनाव के बाद ये वादा एकदम भूल गए। हम एमएसपी को कानून बनाएंगे। ये हमारी गारंटी है कि किसानों को एमएसपी कानून के तौर पर मिलेगी। खेती के सारे सामान जीएसटी से मुक्त करेंगे ताकि आपको महंगे नहीं मिलेंगे। आपका जब नुकसान होता है तो आजकल आपको मुआवजा समय पे नहीं मिलता। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको पूरा मुआवजा मिलेगा, भुगतान मिलेगा। और भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाएगी और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी। ये हमारी गारंटी है किसानों के लिए। देखिए बहने, मैंने महंगाई की बात की। मैं जानती हूं कि सबसे ज्यादा बोझ कौन उठा रहा है महंगाई का। आज पेट्रोल 100 रुपए है, डीजल 90 रुपए है, गैस का सिलेंडर हर जगह 1000 से 1200 है, सोना 73,000, चांदी 90,000, दाल महंगी, सब्जी महंगी, मिट्टी का तेल महंगा, हर चीज का दाम बढ़ गया है। कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है। जब घर में कोई बीमार पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, आपका दिल घबराता होगा। जब त्योहार आता है, आपको कुछ खरीदना पड़ता है, आपका दिल घबराता होगा। जब घर में मुश्किल पड़ती है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं जानती हूँ कि आप ही भूखी रहती है, सबको खिला के सोती हैं, संघर्ष आप करती हैं। और आपकी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं रही। आपने खुद देखा कि जब एक अच्छी सरकार आती है, जिसकी नीयत ठीक होती है, तो कितना काम हो सकता है आपके लिए। आजकल पूरे कर्नाटका में आप बस से यात्रा करती हैं, फ्री में करती हैं ना? करती हैं? करती हैं? अच्छा लग रहा है आपको ये? तो देखिए, जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो ऐसी स्कीम्स लाते हैं जिससे आपकी मदद होती है। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो गरीबों की सरकार नहीं है, वो आम आदमी की सरकार नहीं है, वो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए है। देश का लोहा, देश का कोयला, देश की बिजली, देश की सड़कें सारी इनको सौंप दी हैं। मैंने पहले कहा हवाई अड्डे सौंप दिए हैं,
हाईवे सौंप दिए हैं, बंदरगाह सौंप दिए हैं, सरकारी बैंकों से इनके 16 लाख करोड़ माफ कर दिए हैं, किसानों के लिए एक पैसा नहीं। और पूरे देश में इनकी एक साठगांठ है पूरे देश की मीडिया के साथ। सारी देश की मीडिया आज खरबपति चला रहे हैं, आपको सच्चाई कभी नहीं दिखती। आपके लिए जो बैंक खुले थे, वो जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनके लोन माफ करते हैं, आपको पता नहीं चलता, लोग चुप रहते हैं, मीडिया चुप रहती है। जब विपक्ष पर हमला होता है, सांसदों को संसद से निकाला जाता है, तो कोई सवाल नहीं उठाता। मीडिया कहती है कि सिर्फ मोदी जी ऐसा कर सकते हैं। जब दो चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है, तो सारी मीडिया चुप रहती है। जब मोदी जी स्कीम निकालते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उनको चंदा दे रहा है उसका नाम गुप्त रहना चाहिए, तब कोई सवाल नहीं उठाता। जब मोदी जी कहते हैं कि कोई भ्रष्ट है और उस नेता के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं और फिर वही नेता उनकी पार्टी में चला जाता है, तो कोई कुछ सवाल नहीं उठाता, सब वाह वाह करते हैं, सब कहते हैं कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। रेवंत जी ने आपसे कहा कि दिल्ली पुलिस इनके यहाँ पहुंच रही है, तेलंगाना में। मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता कि चुनाव के समय जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन पर ये सब क्यों हो रहा है। जब चंदा की लिस्ट निकलती है भाजपा की कि किसने चंदा दिया, और पता चलता है कि जिस पर छापा मारा था उसने चंदा दिया, उसके बाद छापे बंद। पता चलता है जिस पर भ्रष्टाचार का केस लगाया वो चंदा देता है, तो भ्रष्टाचार का केस खत्म हो जाता है। जब सच्चाई बाहर आती है तो देश का मीडिया आपको दिखाता नहीं है। और आज इतनी गंभीर परिस्थितियां बन गई है हमारे देश की। सबसे अमीर पार्टी आज भाजपा है, सबसे ज्यादा सत्ता है इनके पास, सबसे अहंकारी प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए आपने सब जगह सुना होगा कि इनके नेता कह रहे हैं कि संविधान को बदल डालेंगे। इनके नेता कह रहे हैं कि अगर इनको 400 सीटें मिलेंगी इस चुनाव में तो ये संविधान को बदल डालेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये संविधान क्या है, इससे आपका क्या मतलब है, आप समझ रहे हैं, इसको गहराई से समझिए। इस संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं मेरे भाइयों, इस संविधान से आपको आरक्षण मिलते हैं। इस संविधान से इस देश में यह तय किया था हमारे पूर्वजों ने कि चाहे वो किसान हो, चाहे एक गरीब हो, एक छोटे से गांव में, चाहे छोटे से शहर में कोई रहता हो, या इस देश का प्रधानमंत्री हो, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको वोट मिलेगा। तो ये जब संविधान को बदलने की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने की बात करते हैं। कोली समाज के लिए जब हमारी सरकार ने इनको एक पत्र भेजा कि आरक्षण होना चाहिए, तो मोदी जी की सरकार ने मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। आपको समझना पड़ेगा कि ये सब बातें आपके सामने नहीं आ रही हैं। चुनाव के समय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आकर आपको सिर्फ इधर उधर की बातें बताते हैं। आजकल तो बहुत बहकी बातें करने लगे हैं। चाहते हैं कि हर चुनाव को हिंदू मुसलमान पे लड़ा जाए। 10 सालों से इनका राज रहा है, एक काम करके नहीं दिखाया, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि आपके सामने जब चुनाव के समय आए तो अपने काम की बात करें, आपको बताएं कि इन्होंने कितने रोजगार दिए, इन्होंने कितने लोगों को शिक्षा दिलवाई, कितने संस्थान खोले। आजकल मेरी बहनों की बातें करते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग?
जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया, तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है इस देश के प्रति। हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा है, जवाहरलाल नेहरू को देखा है, राजीव गांधी को देखा है, मनमोहन सिंह जी को देखा है, वाजपेयी जी को भी देखा है जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे। सब इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि सच बोले, और दूसरी जिम्मेदारी यह है कि देश की सुरक्षा इनके हाथों में है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या किया है इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए? क्या किया है इन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए? हर स्तर पर आपको कमजोर किया है। सिर्फ यही रट लगा रखी है कि 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ। मैं इनको बताना चाहती हूं, प्रधानमंत्री जी, अब ये 70 सालों की रट नहीं चलेगी। 10 सालों से आपकी सरकार है। आप बताओ, आपने कितने विश्वविद्यालय खोले? कांग्रेस ने आईआईटी खोली, आईआईएम खोली, एम्स बनाए, इसरो, डीआरडीओ, नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में क्या बनाया? आकर मंच पर आपको बताएं। कांग्रेस ने पूरा प्राइवेट सेक्टर, पूरा पब्लिक सेक्टर मजबूत किया जिससे आपको रोजगार मिले। ये बताएं कितने रोजगार दिए हैं, बताएं। महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, बताएं किस महिला की सुरक्षा की है? सिर्फ जिन्होंने अत्याचार किया उनकी सुरक्षा की है। अपने काम के बारे में बात करके दिखाएं अगर हिम्मत है इनमें। हिम्मत नहीं है भाई और बहनों, वही आपको 5 किलो का राशन का बोरा पकड़ाया है और ये सोचते हैं कि ये काफी है। मैं नहीं कहती कि ये बुरी बात है, अच्छी बात है अगर गरीबों को राशन मिल रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरी बहनें, आप जब अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं तो आप इसलिए उनको बड़ा करती हैं कि वो 5 किलो का राशन ले लें और उनको कोई रोजगार नहीं मिले? क्या आप ये चाहती हैं? क्या ऐसे विकसित होगा हमारा देश कि जहां जहां संकट है वहां संकट बढ़ाया जा रहा है, जहां जहां गरीब है वहां गरीब होते जा रहा है, और जहां जहां इनके खरबपति मित्र हैं वो और भी अमीर होते जा रहे हैं? क्या ऐसे ही आगे बढ़ेगा ये देश? क्या ऐसे ही तरक्की होगी आपके परिवारों की, आपके शहरों की, आपके गांव की? नहीं। अगर आप जवाबदेही नहीं लाएंगे, इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आज ये प्रधानमंत्री
आपके सामने आकर आपको फिर से गुमराह करके धर्म के नाम पर आपसे वोट लेंगे तो ये आपकी गलती होगी। बहनों और भाइयों, आपको जागरूक बनना है, आपको गहराई से समझना है कि आज इस देश में क्या हो रहा है। मेरी बहनें, आपकी जो गारंटी है जो कर्नाटका की सरकार दे रही है आपको, उसके अलावा हम पूरे देश भर में महिलाओं के लिए गारंटी लाए हैं कि हर महिला जो हर परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना सरकार देगी। 25 लाख तक आपको स्वास्थ्य बीमा सबको मिलेगी, मतलब कि स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं 25 लाख तक मुफ्त मिलेंगी। सरकारी नौकरियों में 50% महिलाओं को मिलेंगी। आशा, आंगनवाड़ी और जो महिलाएं मिड डे मील्स में काम करती हैं उनके मानदेय में जो केंद्र सरकार का जो भागीदारी है उसको दुगना करेंगे हम। ये जो कर्नाटका में सरकार बनी है, शायद आपको खुद एहसास हुआ होगा कि ये आपकी सरकार बनी है, ये जनता की सरकार है, ये आपके लिए दिन रात काम कर रही है। आपको गृह लक्ष्मी योजना दी, आपको गृह ज्योति योजना दी, अन्ना भाग्य दिया, मुफ्त में बस यात्रा दी, युवा निधि दी है। और जैसे आपने अपने अपने बच्चों को सिखाया, उसी तरह से मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो आज की राजनीति है उसको सच्चाई के रास्ते पे लाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। अब आप देख रही हैं कि जब पहले सरकार थी वो कैसी थी और जब कांग्रेस की सरकार आई है वो कैसी है। तो आप खुद समझिए कि कोई आपके मंच पर खड़े होकर सच्चाई की बात कहता है, कोई काम की बात करता है, विकास की बात करता है तो वो काम करके दिखाएगा। यहाँ रेवंत जी भी बैठे हैं। तेलंगाना में भी जो गारंटी दी थी वो आज पूरी हो रही है। तो जो हमने आपके सामने कहा वो हम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे आप सबने अपने बच्चों को सच के बारे में सिखाया, उस तरह से मैंने भी अपनी माँ से कुछ सीखा। और मैंने सबसे बड़ी चीज अपनी माँ से ये सीखी कि राजनीति और जीवन में जब हम कुछ कहते हैं तो हमारी जबान पक्की होनी चाहिए। अफसोस इस बात की है मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों कि मोदी जी की जबान कच्ची है। हर स्तर पर आपको झूठ बोला है। 15 लाख आपके खातों में डालने की बात की, झूठ निकला। 2 करोड़ रोजगार की बात की, झूठ निकला। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम लाए, तमाम ऐसी स्कीमें लाए जिससे आप कमजोर हुए। भ्रष्टाचार की बात की, अपनी पार्टी को वॉशिंग मशीन बना दी, जो भ्रष्ट है वो उसमें चले जाए, साफ हो जाता है। लोकतंत्र को कमजोर किया, सरकारों को खरीदा पैसों से। सबने उनकी वाह की, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये गलत बात था। लोकतंत्र को मजबूत नहीं कमजोर करने की बात थी। इसीलिए ये सारी सच्चाइयां बहनों और भाइयों आज आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अब आपके हाथों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको देश के प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। आपको उनसे ये कहना पड़ेगा कि हमें ये सब बातें नहीं सुननी, हमें ये झूठ नहीं सुनने कि कोई राजनीतिक दल हमारे गहने चोरी करके किसी और को दे देगा, हमारे मंगलसूत्र चोरी करेगा। हमें ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं सुननी। अब हमें सुननी है अपने विकास की बात। हम चाहते हैं तुम मुद्दे पे आओ, मोदी जी यहाँ खड़े होकर आपको जवाब दें, आपके मुद्दों पे जवाब दें। ये आपको बता कर जाए कि इनकी 10 सालों से सरकार है, यहाँ पे आपको पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, आप थकी हुई हैं,
काफी समय से यहाँ इंतजार कर रही हैं, सबके भाषण सुने। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। आप अपने बच्चों का देखभाल करती हो, बच्चों को बड़ा करती हो, उनका भविष्य बनाना चाहती हो, वही इस देश की नई पीढ़ी है। इसी तरह से मेरे किसान भाई मेहनत करते हैं, इस देश की धरती को सींचते हैं अपने पसीने से। आप ही इस पूरे देश के अन्नदाता हैं, इस देश को खिलाते हैं, ये देश आपका है। आज लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है, संविधान को कमजोर करने की बात है, आरक्षण को कमजोर करने की बात है। आपके लिए रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो इस परिस्थिति को बदलने की चाबी आपके हाथों में है। आपका ये जो कीमती वोट है, इसको आप व्यर्थ मत करो। सोच समझ के ये वोट दो, विवेक से ये वोट दो, अपनी सच्चाई देखो। जो आपको बताया जा रहा है वो सच नहीं है, जो आप टीवी में देख रहे हैं वो सच नहीं है। सच्चाई आपका जीवन है, सच्चाई यही है, आपका संघर्ष है। और मोदी जी सत्ता से इतने घिर चुके हैं, इतने अहंकारी बन गए हैं कि उनके आसपास के लोग उनको बता भी नहीं पा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। ये एहसास उनको हो ही नहीं सकता। जिसका परिवार होता है, जो गरीबी में रहता है, जो संघर्ष करता है, जो खेती करता है, जो मजदूर है, उसका संघर्ष मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझाने का एक ही तरीका है, चुनाव के दिन आप अपने वोट को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, इस सरकार को निकाल फेंकिए और एक ऐसी सरकार लाइए जो आपके प्रति जवाबदेह हो, जो आपके लिए काम करके दिखाइए। ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाइए, जैसे आपके सामने खड़गे जी बैठे हैं, 50 सालों से आपकी सेवा की है, परिवार में कितने संघर्ष देखे हैं, कितना दुख देखा है, लेकिन सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, आपके लिए संघर्ष करते रहे। और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं और हम सब आपकी सेवा में समर्पित हैं। आपसे यही आग्रह है कि अपना वोट व्यर्थ मत कीजिए, भारी बहुमत से कांग्रेस को फिर से जिताइए और अपना भविष्य अपने हाथों में लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।